Good morning, friends. Welcome to Bollywood Talent Club's live on air. It's 11:58 a.m. New York time on a Thursday morning, December 21st, 2023. And the weather is very sunny here, bright in here, upper 40s. I hope it works out okay today too. All right, so we have a couple of songs, those. So then we have a very hot topic. What is ego? We are all victims of ego, aren't we? All right, so how do we resist that? So we're going to talk about that, and we set some examples, also give some examples too. All right, so let's get the first song going, dosto. All right, taken from the film. Okay. All right, Beti Bete. All right, daughter and son. All right, okay. Let's go the first song here. All right. अगर तेरी जलवा नुमाई ना होती खुदा की कसम ये खुदा ही ना होती. All right, here's the song, दोस्तों. अगर तेरी जलवा नुमाई न होती, अगर तेरी जलवा नुमाई न होती खुदा की कसम ये खुदाई न होती. अगर तेरी जलवा नुमाई न होती खुदा की कसम ये खुदाई न होती. अगर आँख तुमसे मिलाई न होती मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती. अगर आँख तुमसे मिलाई न होती मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती. बहारों का मौसम न होता सुहाना, बहारों का मौसम न होता सुहाना तेरे दम कदम से हुआ आशिकाना, तेरे दम कदम से हुआ आशिकाना. नज़ारों में ये दिल रुबाई न होती खुदा की कसम ये खुदाई न होती. अगर आँख तुमसे मिलाई न होती मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती. तेरे प्यार ने मुझ पर ऐसा किया है, तेरे प्यार ने मुझ पर ऐसा किया है. मेरा दिल लिया है तेरा दिल दिया है, मेरा दिल लिया है तुझे दिल दिया है. अगर तूने उल्फत निभाई न होती मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती. अगर तेरी जलवा नुमाई न होती खुदा की कसम ये खुदाई न होती.
अगर नूर तेरा न आता जहां में, अगर नूर तेरा न आता जहां में, तो रखा ही क्या था ज़मीं आसमां में, तो रखा ही क्या था ज़मीं आसमां में। कि मालिक ने दुनिया बनाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। अगर आँख तुमसे मिलाई न होती, मेरी जिंदगी मुस्कुराई न होती। अगर तेरी जलवा नुमाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। अरे दोस्तों, ये आपने ये गाना जो सुना फिल्म थी बेटी बेटे. लेट्स सी व्हाट वी हैव द नेक्स्ट सॉन्ग दोस्तों. राइट, टेकन फ्रॉम द फिल्म. ओके, अगर तुम ना होते. हाँ, ओके. I'm really sorry, friends, because this late breakfast causes me a lot of discomfort. I don't know why. All right, so let's get this song now. Agar tum na hote to kya hota. All right, let's get this song going now. All right. Okay, here's the song, dosto. Agar tum na hote. All right, my apologies, dosto. हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते. तुम्हें देख के तो लगता है ऐसे बहारों का मौसम आया
दिखाई न देती अंधेरों में ज्योति, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता। किनारे पे भी तो लहर डुबोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। अरे दोस्तों, अभी आपने ये गाना सुना अभी आपने, राइट? लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट नंबर वी हैव हियर. ओके, टेकन फ्रॉम द फिल्म, राइट दोस्तों, टेकन फ्रॉम द फिल्म. लेट्स सी. ओके, राइट, हियर गोस. काश कहीं ऐसा होता तो क्या होता दोस्तों, राइट? Right, taken from the film Mohra. All right, Akash kahin. Let's try that song and see, which we have not done for quite some time now.
है काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, है काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में। एक तो भी जाता इश्क में तो, एक तो भी जाता इश्क में तो, तकलीफ न होती जीने में, तकलीफ न होती जीने में। काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में। सच कहते हैं, सच कहते हैं लोग कहती कर, रंजन शाप बन जाता है। कोई भी हो रोग ये दिल का, दर्द दवा बन जाता है। आग लगी हो इस दुनिया, आग लगी हो इस दिल में तो, अर्ज है क्या फिर पीने में तो, अर्ज है क्या फिर पीने में। है काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में। एक टूट भी जाता इश्क में तो, एक टूट भी जाता इश्क में तो, तकलीफ न होती जीने में, तकलीफ न होती जीने में। भूल नहीं सकता ये सदमा, याद हमेशा आएगा। किसी ने ऐसा दर्द दिया जो बरसों मुझे तड़पाएगा। भर नहीं सकते जख्म ये दिल के, भर नहीं सकते जख्म ये दिल के। कोई साल महीने में, कोई साल महीने में। है काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में। एक दिल भी जाता इश्क में तो, एक टूट भी जाता इश्क में तो, तकलीफ न होती जीने में, तकलीफ न होती जीने में। काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में। Alright, दोस्तों अभी आपने जो गाना सुना फिल्म थी मोरा। Right, the time right now is 12:19 p.m. New York on the Thursday afternoon, December 21st, 2023. You're listening to Pasand Apne Apne. You had three songs there. And now we have a short talk, brief talk on what is ego. Aren't we all victims of ego, dosto?
You agree with me or you don't agree with me? Put your comments on Facebook Live or on YouTube Live. Okay. All right. So let's have the chat now. A little talk on what is ego. All right. Ego is a complex psychological concept that refers to a person's sense of self, self identity, and self importance. All right. It's a psychological concept. It involves an individual's perception of themselves and their place in the world. The concept of ego has been explored in various fields, including psychology, philosophy, and spirituality. Let's check out some examples, though. The first one is psychological perspective. In psychology, okay, has introduced the concept of the ego as part of his psychoanalytic theory. According to the author, the ego is the realistic part. That is, the author is Sigmund Freud. The ego is the realistic part of the psyche that mediates between the desires of the primitive instinctual part, and the constraints of the superego, internalized societal norms. For example, imagine a person who wants to buy a luxury car. That's the desire, idea's desire. But the superego reminds them of financial responsibilities and societal expectation. The ego would then negotiate a decision that balances these conflicting desires. Number two, everyday examples, those though. In everyday life, ego can be observed in various situations. Right. Number one is professional life. An employee who constantly seeks recognition for their achievements, desires promotions, and feels the need to be superior to colleagues may be exhibiting a strong ego in the workplace. The next one is interpersonal relationships. In a romantic relationship, if one partner always needs to be right, wants to control decisions, or feels threatened by the success of the other, it can be attributed to a strong ego. All right. The next one is social media. The need for constant validation through likes, comments, and shares on social media platforms can be seen as an expression of ego, where individuals seek external approval to bolster their self-esteem. Social media, those are the need for constant validation through likes, comments, and shares. That's what we all look for, right? All right, number three, spiritual and philosophical perspective. In spiritual and philosophical traditions, ego is often associated with the illusion of a separate self. Teachers like Eckhart Tolle and Buddhist philosophy emphasize the need to transcend the ego for spiritual growth. Here's an example, dosto. A person who identifies strongly with their possessions, achievements, and external image may find it challenging to let go of these attachments, hindering their spiritual or personal development. Understanding one's ego and its role in various aspects of life is crucial for personal growth and healthy relationships. It involves self-awareness and the ability to balance individual desires with the needs and expectations of the larger social and cultural context. Right, we had a little discussion and talk about this though. So it's very interesting, all right. So the time right now is 12:23 p.m. in the afternoon on Thursday, December 21st, 2023. I think it's time for us to wind down our program for this afternoon, and hope to see you again this evening on another program that is Pasand Apni Apni 1, alright? So till that time, that's going to be 9:30 p.m. India time. That's going to be 8 a.m. 9:30 p.m. New York. I'm sorry, I'm a little confused here. There's going to be 9:30 p.m. New York time today. It's Thursday, and there's India time will be 8 a.m. on Friday morning. Okay, so we'll meet next time. Those to have a very, very pleasant day. Thank you very much for having joined. All right, take care. Be safe, friends. All right.